हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं इस लेट्स प्ले सीरीज़ लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन पे। तो भाई हमें लास्ट एंडिंग रेडिएंट एंडिंग कर रहे हैं। सनडेड मोनार्क को मार चुके हैं। थोड़ा ग्लिच खा गया था ये। Certainly is not. Oh, thank you. My past is but for both that I have no more, and I have not. I cannot. I'm used to it. तो हम हरा चुके हैं सनडेड मोनार्क को। ग्लिच खा गया था तो इस बार इजीली हो गया, वरना काफ़ी ट्राई तो लगे ही है मेरे को इसको मारने में। कोई ना। Justin, I'm sorry. This was all my fault. I just wanted things to be better for us. Forgive me. No, get that away from... I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. ओके, रोगार रेल्म में जाना है हमने। ये है अडीर भाई। Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia of shameful distortions of the truth. For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. Yet in return, I was betrayed. Those few power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me, and waged a terrible war of needless slaughter. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rogar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. In a world left black
crusade, the judges banished me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods, figures of worship, their real ambition all too clear. Yet an outcome, the people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment? Far more than was ever spilled in my name. And now, after all the time mankind have had to shape their own destiny, see what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. They believed they were capable of guiding themselves, but have been proven sorely mistaken. Mankind needs me, now more than ever. And there are some other beings who claim godhood. Where are they? What of Aureus and the abhorrent umbral creature? They are cowards, hiding in foresight and obfuscating shadow, deeming you unworthy of their presence, their communion. And yet, here I stand before you with true words and open arms. For I love all of my children, even the wayward ones. Listen to me. You must stop this before you allow yourself to condemn all of mankind for eternity. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. ओह, इसमें भी हमको अनाइलेट कर दिया। तीनों एक ही एंडिंग में बस हम बचे, तो बाकी दो एंडिंग में तो हमको अनाइलेट ही हुआ है। तो गुड एंडिंग कैसे हुई फिर ये? तो भाई इसी के साथ रेडिएंट एंडिंग भी पूरी होती है हमारी, और साथ ही साथ मैंने पूरे का पूरी तीनों एंडिंग्स कवर कर ली हैं। तो ये गेम भी इसी के साथ ख़त्म करूँगा भाई, और बहुत तगड़ा गेम लगा मेरे को। तो मैंने पहला ऐसा गेम है जिसको मैंने तीनों एंडिंग करी है, मतलब एंडिंग्स ट्रिपल 2-3 एंडिंग हो तो मैंने सारी एंडिंग्स करी। ऐसा पहला ही गेम होगा ये। काफ़ी खेलना पड़ा मेरे को। बेस लेवल पे तो गेम के जो बॉसेस थे वो बेकार थे, मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। बट NG+ में तो भाई बहुत तगड़े बॉस थे, बहुत ट्राई लगे मेरे को बहुत सारे बॉसेस में, तो मज़ा आया।
बिना बंदों की हेल्प के वो भी नहीं पाया। ऐसे 2-4 बॉस थे जो बिना बंदों की हेल्प के मैं मार भी नहीं पाया, बंदों की हेल्प चाहिए थी उनमें। तो भाई गेम डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मेरे को बढ़िया लगा। अम्ब्रेला और सब थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ग्लिचेस थे, वॉइस बार बार कहीं कहीं पे कट रही थी भी, बट ओके इतना तो चल सकता है। साथ ही साथ मैंने तीनों एंडिंग कर ली, तो न्यू क्लास भी अलग हो गई है, रेडिएंट प्यूरीफायर। तो इसी के साथ भाई ये एपिसोड भी ख़त्म करता हूँ और ये सीरीज़ भी। अगली सीरीज़ होगी भाई हमारे असैसिन क्रीड ओरिजिन्स। तो आपसे मिलूँगा फिर मैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं फिर भाई।